Hey guys, welcome back to my channel. Here I am Miss Vaishnavi Mittal, and in today's video I am going to explain you all chapter Heat for class 7 part 3. And if you haven't watched my part 1 and part 2 videos, the link is in the description box. Go and watch it now so you will be able to understand part 3 really well. So let me give you a short review of what we studied in part 1 and part 2. We studied what is heat, a fun activity, about steam engine, sources of heat, another fun activity, about temperature, what is thermometer, about the components of the thermometers, about clinical thermometer, laboratory thermometer, and in today's video I am going to explain you transfer of heat, which means the transfer of heat from one place to another. यानी कि heat का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने को हम कहते हैं transfer of heat. So let's see. There are three methods through which heat can be transferred. यानी कि ऐसे तीन तरीके होते हैं जिससे हीट वन प्लेस टू दूसरी प्लेस तक जा सकती है. दिस मीन्स दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू वन प्लेस टू अनदर यूजिंग थ्री मेथड्स. व्हाट आर दे? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कंडक्शन. सो व्हाट इज कंडक्शन? Conduction is the form of heat transfer within a solid object or between solids in contact. In short, in conduction, energy is transferred by direct contact. यानी कि जब कोई दो चीजें एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी और जो वन प्लेस और जो एक चीज से दूसरी चीज तक हीट ट्रांसफर जिस प्रोसेस से होगी उसे हम कहते हैं कंडक्शन. यानी जिस मेथड से होगी उसे हम कहते हैं कंडक्शन. और कंडक्शन में जो हीट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से पास होती है. कैसे पास होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट से. यानी कि जब मैं किसी चीज को छूऊंगी, जैसे मैंने एक गरम, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है. यहाँ पर स्टोव, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं मैंने स्टोव ऑन कर रखा है और उसके ऊपर मैंने एक स्टील का बना हुआ फ्राई पैन दिख रखा है जिसका जो हैंडल है वो भी स्टील का बना हुआ है. ओके, अब यहाँ जो हमारा स्टोव है वो है हमारा सोर्स ऑफ हीट. क्या है? सोर्स ऑफ हीट. और इस सोर्स ऑफ हीट से हीट निकली और यहाँ से जाते जाते हमारे पहुंच गई फ्राई पैन तक. और अब इस स्टोव की वजह से हमारा फ्राई पैन भी गर्म हो गया. ओके, तो अब फ्राई पैन से यहाँ से हीट ट्रांसफर होते 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 इसके हैंडल तक पहुंच गई और अब हमारा हैंडल भी गर्म हो चुका है. अब जब मैं उस हैंडल को अपने हाथ से टच करूंगी तो हैंडल की जो हीट है, हैंडल जो गर्म हो चुका है तो उसके ऊपर हीट है. अब वो हीट जैसे ही मैं टच करूंगी तो मुझे भी गर्म लगेगा. कैसे? क्योंकि वो हीट जो है वो ट्रांसफर होके मेरे हाथ तक आ जाएगी और मैंने उसे टच करा तभी तो वो ट्रांसफर हुई. पहले तो नहीं हो रही थी, जब मैंने टच करा तब वो ट्रांसफर हुई. तो जो हीट टच करने से ट्रांसफर हुई है तो वो किस मेथड से हुई है? कंडक्शन के मेथड से. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कंडक्शन यूजिंग अनदर एग्जांपल. Here you can see I have lighted one candle and जो हमारी कैंडल की फ्लेम है वो सिर्फ, और यहाँ पर हमने एक कैंडल ले रखी है जिसे मैंने लाइट अप कर रखा है. यहाँ पर मेरे पास एक मेटल रॉड है और मेटल रॉड को मैंने कैंडल के ऊपर अपने हाथ से पकड़ रखा है. अब जो हीट है वो हमारे कैंडल से निकल रही है तो हमारी कैंडल क्या हो गया? सोर्स ऑफ हीट. ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा सोर्स ऑफ हीट है, हमारी कैंडल है, वो सिर्फ इसने ही पार्ट को हीट कर रही है. यानी कि हमारी मेटल रॉड की सिर्फ दिस मच पार्ट इज बीइंग हीटेड because of the candle flame. But the
energy, the heat energy is transferring from this end till the other end through the process of conduction. Okay, क्योंकि अब वो देखो वो ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है तभी तो ये ट्रांसफर हो रही है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के प्रोसेस से. ओके, अब यहाँ से आप देखोगे कि मैंने मेटल रॉड को अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो अब जो उसके दूसरे एंड से, इस दूसरे एंड से मेरे हाथ तक हीट आई है, वो किस प्रोसेस से आई है? कंडक्शन से. और अगर आप पूछोगे कि क्यों कंडक्शन से ही, क्यों कन्वेक्शन या रेडिएशन से क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे टच कर रखा है. जब मैंने उसे टच कर रखा है तो मैं उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आई हूँ, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से जो मेटल रॉड पे हीट थी वो मेरे हाथ पर ट्रांसफर हो गई. ओके, और अब आप ये मत समझना कि अगर वो वहां से ट्रांसफर होके मेरे हाथ तक आ गई है तो हमारी मेटल रॉड अब गर्म नहीं है. हमारी मेटल रॉड भी गर्म है, बट उससे थोड़ी सी हीट ट्रांसफर होके हमारे हाथ पर आ गई है. ओके, अब मैं आपको यही सेम एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ जिससे ये आपको अच्छे से समझ आ जाए. Here you can see that 6 men are standing in a straight line, and we have to pass one book from the first man till the last man. Okay, there are 3 methods to transfer the book from first man to the last man. How can we transfer? The first process is shown in the GIF. You can see that the first man is transferring the book till the second, then the second till third, then third till fourth, then fourth till fifth, and then the fifth till the last, or we can say the sixth person. Okay, and what's the second method? The second method is that the first person can directly throw the notebook and the last person can catch it. Okay, and what's the third method? The third method is that the first person can take the book back and go by himself to give the book till the last bencher. Okay, so these are the 3 methods through which the book can be transferred from the first person till the last person. Okay, any doubt? So now first we will talk about the first method. So you can see in the first method, which is shown in the GIF, the first person has taken the book from the table and then transferred it to second till third till fourth, and in this process you can see that the book is transferring by direct contact. Okay, the book is transferring by direct contact. They are giving it till the other, then the other, then the other. So this book is transferring by direct contact. And if we imagine that the book is heat, then what will be the process called, which is transferring the heat from first person to last person? It will be called conduction, because in this process the heat is transferring through direct contact. Now I hope that you have understood that what is the process of conduction really well. If you have any doubts, then tell me in the comment section. I will surely answer that. And don't forget to like my video and subscribe to my channel for more such educational videos. And I will be explaining you all about convection and radiation in my next video. So happy learning. Keep supporting. Thanks for watching.